Welcome to Flawless Learning. Today I'm going to start a new segment in Python. Okay, so basically Python is most used programming language, as you all know, and now I'm going to start a very basic to advanced in Python. So today is first class of Python. So in this class we will talk about basic data types. Okay, so what are the basic data types in Python? So first is integer. So integer, so you know that integer is like a whole number, this kind of thing, like 1 2 3 4 5. This numbers are called in integer, right? So how can you get that integer in Python? Basically this a equals to is 10. That means we have defined a a in a is some kind that we define that, okay, a where we assign an integer which is 10. Okay, क्या होता है ना इन डेटा टाइप्स पे कि ए पे स्टोर होगा 10 नंबर एंड व्हाट्स द टाइप ऑफ ए, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इन लाइक तुम मतलब ऐसे देख के तुम बोल सकते हो कि 10 इज ए इंटीजर, but how can you print in Python that was the type of a? Okay, so basically the code is for that is type of a, and see this is int is int, so int represent integer. Okay, so that's the first data types. Now second is float. So what is float? So float is like the decimal which takes the decimal value in that number, like just 10.2, 12.3, 15.45, this kind of things are float numbers. Okay, so how can you identify the type of that number? So basically it's type of a, see this is the float. Okay, now here you can also do some arithmetic operation with these numbers. Okay, so basically see this is the addition, this is the subtraction, this is the multiplication, this is the division. So basically what is a here? So a is like 10.2 here you have defined. Now one more thing that you have to clear very carefully, that here I have suggest that a is 10.2 to 10.2 is assigned in that a. Okay, now we are going to that operation, arithmetic operation. Okay, so first is like a 10 plus 2. So this is I have used here dip note. Okay, you can use any kind of you can use that Google Colab, you can use Jupyter Notebook, you can use VS Code. There's a lot of, you can use Anaconda Navigator also. So there's a lot of like medium you used. So basically I have used did not just that so code basically, so have to define like a equal to like 20. Okay, 20. So here I am defined that a is 20. Okay, now how can I do that arithmetic operation? So basically a plus 10. So that's how you can that addition. Okay, so this a plus 10. So let's run it out. Okay, so see that is 30. So that means a is 20. Now a plus 10 is 30. Okay, so that's how you can do that arithmetic operation. And if you simply minus, so it is the minus, right, like 10. So this is the arithmetic operation you have you can done in Python also. Okay, now coming to how can you like import sys, that like system में कितना size लिए है एक number के लिए. Okay, so import sys and now print sys dot get size of. So we have if we want to check that how many size in of a integer or of a float, so that's how you can print, like print the sys dot get size of a. Now a is here a float number. Now for float number the size is 24, and if you take that integer value, so it see this is a 28, I think. Yes, 28. Okay, now coming to next data type like complex. So complex data set, complex data, you all know that there is a image imaginary part and there is a real part, right? So b is here 3 plus 4j. Now you, how can you हैंडल दैट मतलब तुम रियल पार्ट को कैसे तुम देख सकोगे? सो बी डॉट रियल, सो दिस इज गिव द रियल पार्ट ऑफ दैट नंबर. ओके, सो बी डॉट रियल,
So real is like, what is the real part of this number? 3 plus 4j is 3, right? So this is the 3 is real part and 4 is that imaginary part. Okay, तुमने क्लास 12 में तो ऐसा कम्प्लेक्स नंबर तो जान मतलब पढ़ा ही होगा कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वेर आई इज आयोटा like this kind of thing, like 3 plus 4i, and then we have to calculate this operations, different kind of operation in complex number. Also there's a real part, there's a imaginary part in complex number. So how can you tackle that in code in Python? So basically for real the code is b dot real, and for imaginary part we have to just write b dot image. Now b is the number, that complex number we defined, that is b. Like see, imaginary part is 4, so that's the complex. Now how can you declaration of a complex number, right? So how can you like type of b, what's the type of b and what's the real part of it, what's the imaginary part of it? So how can you write it, how can you print it? Just simply b is 3 plus 4a. Now print is type of b. Now string of type of b is complex. See, this is the complex number and real part of b is 3 and imaginary part of b is 4. So that's how you print with string. Okay, so क्या होता है ना, 3 और 4 प्रिंट होके आ गई, तो अभी हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन सा रियल पार्ट है, कौन सा इमेजिनरी पार्ट है? सो हैव टू राइट इट प्रॉपरली ना. सो यू हैव टू राइट इट प्रॉपरली. हाउ कैन यू राइट इट प्रॉपरली? बेसिकली यू हैव टू take that print statement. Okay, so print statement, what it done, print like in the code. See, in the single code we have to write like this is, see, this is the real part of b. So how can you write it inside the print with the single code, and then after comma you have to, which you have to print like b dot real is the real part of b, right? So then print within single quote you have to write that string like real part of b, then comma, then b dot real is that number which you want to print. Okay, एंड इमेजिनरी पार्ट में भी ऑल्सो क्या करना होगा तुमको, जस्ट सिंगल कोड के अंदर लिखो जो तुम लिखना चाह रहे हो, लाइक इमेजिनरी पार्ट ऑफ बी और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, दिस काइंड ऑफ थिंग. देन आफ्टर कॉमा तुमको क्या लिखना होगा, बी डॉट इमेज, लाइक IMAG, right? That for imaginary part the code is b. B is the number which you have defined as a complex number b. Here you have, अगर तुमको ये b के जगह तुम d लिखना चाहते हो, कुछ भी लिखना चाहते हो तुम लिख सकते हो. ओके, नाउ सिक्वेंशियल डेटा टाइप. बट इधर एक बात तुमको मैं बोल देती हूँ कि अगर तुम डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, सो फॉर डिक्लेरेशन देयर सम काइंड ऑफ रूल, लाइक यू हैव टू, you don't go for that like keywords. So what is the keywords in Python? Like print, like complex, like int, like float, this kind of things, because they are already defined, so we have to ignore that kind of names. Okay, so there's different keywords we have to ignore whenever we declared a number. Okay, so declare करने के टाइम तुम लोगों को कुछ कुछ जो कीवर्ड जो पाइथन के अंदर ऑलरेडी है, जैसे प्रिंट का मतलब कोड क्या समझेगा कि प्रिंट करना चाह रहे हैं, राइट? टाइप ऑफ बी के अंदर क्या समझेगा कोड कि टाइप कहना चाह रहे हैं. तो ये तरह का जो नम होते हैं, जस्ट प्रिंट, दिस टाइप, दिस काइंड ऑफ, सो यू हैव टू इग्नोर इट. ओके, नाउ सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स. सो सीक्वेंशियल डेटा टाइप के अंदर फर्स्ट आते हैं स्ट्रिंग. So string is nothing but that Python, this kind of word. Okay, in English we use word, right? So that word, that sentence, so in Python we use that string. Okay, so like Python, so how can you handle that Python? So its type is like type of S1, which is string. So see, okay, so basically just comment it out. So how can you comment it out? just सामने ऐसे हैशटैग लगा दो, ठीक है. सो इसको प्रिंट करते हैं कि S1 का टाइप क्या है, हम लोग देख लेते हैं. सो CSTR, इसका मतलब है स्ट्रिंग. ओके, सो स्ट्रिंग है पाइथन का डेटा टाइप. नाउ हाउ कैन यू इंडेक्स अ पाइथन? इंडेक्स मतलब क्या होता है कि तुम ये प्रिंट करना चाह रहे हो जो तुम वर्ड लाइक स्ट्रिंग तुम दिए हो, लाइक पाइथन इज अ स्ट्रिंग हियर, सो यू वांट टू प्रिंट द फर्स्ट लेटर ऑफ पाइथन और string. Okay, so how can you print that? Basically S1 is your Python and
the third bracket, within third bracket there is 0. So ये सबको याद रखना होगा कि पाइथन में इंडेक्स स्टार्ट्स विथ 0. ओके, इन पाइथन द इंडेक्सेस स्टार्ट विथ 0. 0 का मतलब पाइथन में होता है 1. लाइक क्या होता है, अगर 0 तुम दे रहे हो तो फर्स्ट इसको प्रिंट कराते हैं. ओके, see after print it shows p, right? So p is the first letter of this string, right? Of this Python, p is the first letter. So that means if we want to print the first letter, we have to write it within third bracket 0. That's how you can indexing a string, like indexing. Okay, so this. So समझ में आ गया होगा. I hope you all understand that whenever we have to print that first letter of string, we have to take that within third bracket, we have to till 0. If you want to print the second letter of the string, we have to write it 1. Okay, and if हम लोगों को ये चाहिए कि 2 से like this, second, third and fourth तीनों एक साथ चाहिए. ओके, सो हाउ कैन यू प्रिंट दैट, लाइक S1 1 to 4. ओके, 1 to 4. सो 1 मतलब होता है सेकेंड वर्ड, सो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. सी, सो 1 to 4. ना तुम लोगों का एक कन्फ्यूजन इधर हो सकता है कि यदि हम लोग तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो हम लोगों को इधर तो 1 to 3 लिखना होता मतलब चाहिए. जैसे कि सेकेंड के लिए 1, थर्ड के लिए 2 एंड फोर्थ के लिए 3. देन क्यों हम लोग 4 लिखे? क्या होता है ना इन पाइथन, जिस द थर्ड जो लास्ट में होता है वो हम लोग एक्सक्लूड करते हैं पाइथन में. ओके, so there's a two thing you have to remember, that index starts with 0, and in the third bracket, which this colon is like starts with that first index, okay, and goes up to the third index. Okay, third, it's not 4, like 4 is excluded. If you want to print the first to fifth, then you have to write it 1 to 6. ओके, सो लास्ट वाला जो नंबर होता है ये एक्सक्लूड होता है, ये हमेशा नहीं प्रिंट होता है. ओके, दैट्स यू हैव टू, तुमको याद में रखना चाहिए. ओके, सो बेसिकली अगर हम 1 to 4 ऐसे विद इन थर्ड ब्रैकेट, एंड हाँ यू हैव टू मतलब तुमको ये ब्रैकेट भी बहुत अच्छे से याद रखना होता है कि इंडेक्सिंग के लिए हम लोग थर्ड ब्रैकेट ही यूज़ करते हैं, नॉट फर्स्ट और सेकेंड ब्रैकेट. ओके, बिकॉज देयर्स आर ब्रैकेट्स प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल. फॉर पैरेंथेसिस लाइक फर्स्ट ब्रैकेट यू हैव टू यूज़ इन डिफरेंट जगह में, तुमको फर्स्ट ब्रैकेट अलग हो जाता है, सेकेंड ब्रैकेट अलग हो जाता है, थर्ड ब्रैकेट अलग मायने रखते हैं. सो डिफरेंट मतलब अलग अलग ब्रैकेट अलग अलग मायने रखते हैं पाइथन में. ये भी तुमको याद रखना होता है कि दी ने ब्रैकेट बोल दिया तो कोई भी ब्रैकेट लगा दिए नहीं होगा, तुमको थर्ड ब्रैकेट ही लगाना पड़ेगा. ओके, एंड तुमको कुछ देर बाद ही पता चल जाएगा जब लीस्ट, डिक्शनरी, टैपल ये सब तुम सीख जाओगे कि देखना कि एक एक ब्रैकेट के लिए एक एक डेफिनेशन से बदल जाएगा. Okay, so you have to very clear about the brackets also. Here we have to use that third bracket. Okay, so now if we want to that reverse, so how can you reverse? Like you see, there's a two way you can print that n. You can print that n in the Python. How can? First way, I have already told you that this is first index is 0, second is 1. Now t is for here is 2. Now this 2, then 3, then 4, then 5. So if you print that 5, now see what's happened. See, there's a n. So basically n is print, right? N is printed. Now if we want, there's another way also, like -1. What's a -1? It's for reverse string. So -1 means last जो word है, like होता है ना कि माइनस. सो +1 मतलब सेकेंड लेटर, एंड माइनस मतलब लास्ट जो लेटर है उस वो प्रिंट होगा -1. सो -1 इज लाइक रिवर्स. सो सी -1 इज n. नाउ इफ जस्ट सोच के ये बताओ, अगर हम लोग -4 से -1 तक हम लोग प्रिंट कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? जस्ट डोंट सी द आंसर, जस्ट बताओ कि क्या होना चाहिए. अगर तुम सही गेस किए हो दैट मीन्स तुमको इंडेक्सिंग आ गया. ओके, सो और थोड़ा सा गलत हो गया तो मैं बता दे रही हूँ कि क्या होगा.
देखो -4 to -1, ओके। नाउ मैंने क्या बोला कि -1 लास्ट में जो रहता है उसको हम लोगों को एक्सक्लूड करना होता है। लाइक -4 मतलब लास्ट से हम लोगों को जाना पड़ेगा 1 2 3 4, सो दिस टी, सो टी इज लाइक -4 लास्ट से जाना पड़ेगा क्योंकि इधर माइनस है, देयर से माइनस, सो यू हैव टू टेक द रिवर्स ऑर्डर, सो देयर से 1 2 3 4। नाउ पाइथन इज द फोर्थ from the last, so it prints t like -4, then -3 is for age, and -2 is 0, and -1 लास्ट को हम लोगों को क्या भी मैंने सिखाया कि लास्ट को तुम लोगों को एक्सक्लूड करना होगा या लास्ट को नहीं प्रिंट होगा। तो क्या प्रिंट होना चाहिए? THO, सी दैट्स देयर THO, ओके। आई होप अभी समझ में आया है तुम लोगों को, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, लाइक देखो मैंने बहुत डिटेल्स और एक एक बात बोल रही हूँ तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा आई होप, बट मैं चाह रही हूँ कि सबको एकदम जो बिल्कुल नहीं जानते हैं उसको भी समझ में आए, एकदम ज़ीरो से मैं कराना चाहती हूँ। तो मैंने इसलिए कहीं मतलब धीरे धीरे एक एक चीज़ें बोल रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, अगर तुम लोग बेसिक जानते हो तो तुम लोगों को रिवाइज हो जाएगा, और अगर तुम लोगों को ये बेसिक ना पता है, आज पहली बार तुम पाइथन क्लास में कर रही हो और पाइथन सीख रहे हो, तो तुमको मजा आएगा आई होप, राइट। नाउ कॉन्कैटिनेशन इसको बोलते हैं। कॉन्कैटिनेशन मतलब क्या होता है? जस्ट ऐड टू स्ट्रिंग्स, लाइक इफ वी वांट टू दैट स्ट्रिंग दैट पाइथन, उसके साथ चलो एक काम करते हैं, s1 प्लस s2 करते हैं, एंड s1 इज ऑलरेडी डिफाइंड। क्या करते हैं? s2 में हम लोग प्रोग्रामिंग लिख देते हैं। सो फॉर स्ट्रिंग क्या करना होता है हम लोगों को? मैंने बोला कि विद इन सिंगल कोट लिखना होता है, जो मतलब इसको नहीं लिखना होता है नंबर्स को, यू डोंट हैव टू राइट द नंबर्स इन द सिंगल कोड, बट फॉर स्ट्रिंग्स यू हैव टू राइट इन द सिंगल कोड। सो प्रोग्रामिंग इज द स्ट्रिंग्स, so that's why we have to write it in the single code. So see, now if we want to add these two like Python then programming, so how can you concatenation? So basically it's called as concatenation, okay। different term भी तुमको सीखना होगा, okay। so concatenation, now let's run it out। देखो पाइथन प्रोग्रामिंग आ गया, ओके। जस्ट टेक अ स्पेस, सो देखने में अच्छा लगेगा। सो मैंने एक प्रोग्रामिंग का पहले एक स्टेप दे दिया, देखो पाइथन प्रोग्रामिंग आ गया, ओके। सो दैट्स हाउ यू कैन जॉइन दिस टू वर्ड्स, ओके। नाउ इफ यू वांट टू लाइक फाइंड दैट ऑन है कि नहीं, पाइथन के अंदर ऑन है कि नहीं, लाइक कुछ भी words if there's exist in that string or not, how can you find it? Like dot print, so s1 is Python and we have to find it that is there on like on in the that string s1 or not. So how can you find that? So basically you have to first take that s1 like the string you have defined like s1 dot find, and then within single bracket, within first bracket, and then within single quote that word you want to find it out, okay। so this on, so s1 dot find on, so basically if you ये print तुम कराओगे, like मैं अलग से इसको ही करके दिखा रही हूँ, कोड्स मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा टाइम बच जाएगा हम लोगों को। see here it's write it as 4, सो इसका मतलब है कि फोर्थ इंडेक्स में तुम देखो तुमको पाइथन मिल जाएगा, मतलब ऑन मिल जाएगा, ओके। 4 ऑनवर्ड्स, लेट्स सी 1 2 3, देयर इंडेक्सिंग राइट स्टार्ट्स विद 0, सो 0 1 2 3 4, लाइक 4 के बाद है ऑन है, राइट। सो दैट्स द मैजिक। नाउ इफ वी वांट टू रिप्लेस, लाइक मैं बोल रही हूँ कि ऑन की जगह ऑफ लिख दो, सो इफ वी वांट टू रिप्लेस अ छोटा सा स्ट्रिंग into a different string, so how can you replace that? एकदम simple, dot replace, okay। so dot replace like on के जगह off लिख दो, so s1 dot replace, that's the code, and so on के जगह just off, so what you have write like a string just within the single bracket we write it here and just run it,
देखो पाइथन के जगह आएगा ऑफ आ गया, राइट, ऑन के जगह. So that's how you replace the words also. Okay, and now s1 dot lower is like python. मैंने ये देखो पूरा का पूरा जो string मैंने लिखा है, it's in the small letter. So how can you upper or lower? So how can you convert it into the capital letter? So that's the code is s1 dot upper, and for lower is s1 dot lower. Okay, now इसको स्प्लिट भी हम कर सकते हैं, लाइक हेलो एंड वर्ल्ड मैं अलग अलग से चाह रही हूँ. सो हेलो वर्ल्ड डॉट स्प्लिट एंड देन विद इन सिंगल कोड. सी दिस प्रिंटेड एज हेलो देन वर्ड. एंड ऑल्सो वी कैन स्ट्रिप, लाइक अगर ध्यान में कोई भी अगर स्पेसेस छोड़ा है तो स्ट्रिप कर देगा. ठीक है, दैट्स वाई वी नीड स्ट्रिप्स. एंड देन अनअवेलेबिलिटी ऑफ एस्केप कैरेक्टर. दैट मीन्स see here escape character inside a string. Like if we want to print करके मैं दिखा दी. see like basically क्या होगा इधर, अगर मैं जैसे सिंगल कोड और डबल कोड के अंदर मैं स्ट्रिंग लिखती हूँ, लेकिन कोई मुझे सच में मतलब वो कोटेशन के अंदर चाहिए. जैसे whenever we write something like ki this is the writer's name within the inverted quote, like we want to that. Okay, so that name is very very important. So just take it a double quote, and inside the double quote you have to write that writer's name, this kind of thing. Okay, so basically here now the मतलब python confuse हो जाएगा ना कि we have to for string we have to use that code also. So now how can you print the code in your text, right? So that's how we have to, that this is the escape character in python. It's a escape character. Okay, so within this escape character inside, if we use the escape character inside a string, so it's print the text in that way. Okay, now coming to list. So list is also like there's a look vector पढ़ा होगा, so kind of vector you can say. So there's a list like list of number, and धीरे धीरे और तुम जानोगे तो अब और ज़्यादा हो जाएगा कि there is a tuple also. So list is now number like numbers, and list में क्या होता है, list के अंदर भी हम list रख सकते हैं, like list within a list. तो list कब यूज़ होता है, इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है? अगर हम लोगों के पास ग्रुप ऑफ नंबर्स है, ठीक है. So here I have already written in this note here. Okay, a list, this kind of thing, that where to use this kind of thing and what we have done. Okay, so basically list क्या होता है देखो, like list is 1 2 3 4 5 and numbers, group of numbers. and ये जो list है इसके अंदर तुम 6 को और ज़्यादा मतलब तुम चाह रहे हो कि 6 भी इसमें आ जाए. सो क्या करना होगा, तुम थोड़ी ऐसे बैठ के फिर से लिखने लगोगे कि 1 2 3 4 5 6 फिर से लिखना होगा तुमको. तो उससे अच्छा क्या होगा ना, डॉट अपेंड, मतलब 6 को उसके अंदर रख दो. सो फर्स्ट सी मैं पहले ये प्रिंट करा कर तुमको दिखाती हूँ. देखो लिस्ट 1 जब हम लोग प्रिंट करा कर आएगा, ये 1 2 3 4 5 आएगा, आए 1 2 3 4 5. सो दैट्स हियर प्रिंटेड इन द एज लिस्ट 1. बट इफ यू वांट टू अपेंड द 6, like if we want to add 6 in that list 1, so what we have right here like list 1 dot append. So the code is like dot append. now तुम 6 को जोड़ना चाहते हो तो 6. now if now you print like print करके अभी मैं देखती हूँ क्या होता है इसका. see now the list 1 is 1 2 3 4 5 6. so that's how you append any numbers. now list within the list. so now here's also an indexing in list. so how can you index? तो मैं क्या प्रिंट कराना चाह रही हूँ इधर, पहले ये प्रिंट करा के दिखाती हूँ क्या आती है. देखो इधर 0 और 1. सो 0 मतलब क्या, देखो 2 आए हैं, 2 मतलब दिस. सो बेसिकली वेन एवर वी लाइक लिस्ट विद इन अ लिस्ट, सो हेयर फॉर लिस्ट 2 इज दिस इज द 0 इंडेक्स like first, and this is the second like 1. so for indexing now list 2 हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, जो list 2 का 0 फर्स्ट इज 0. सो मतलब इसका कहना चाह रहे हैं. ओके, सो 0 इज 1 2 3 एंड उसके अंदर भी 1 को चुनो. ओके, सो 1 मतलब सेकेंड इंडेक्स, राइट. सो दैट्स वाई इट्स प्रिंटेड 2. ओके, आई होप इंडेक्सिंग इन
लिस्ट इज क्लियर एंड तुमको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो, तुम जस्ट इसको खुद में ट्राई करने की कोशिश करो। जो अगर अगर इधर 1 है इधर 2 है तो क्या प्रिंट करे। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस कमेंट इन, मतलब तुमको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा तभी तुमको क्लियर होगा। तुम बातें सुनने के बाद अगर तुम प्रैक्टिस ना करोगे तो ये आइडिया कभी भी तुम्हारा क्लियर नहीं होगा। ओके, now strings and numbers are both in the list, so we can also inside a list we can use strings and numbers. Okay, both can like in the string. See, list के अंदर 1 है 2 है, like numbers भी है then strings भी है। now indexing in a list मैंने ऑलरेडी ये बोल चुका। now change element, like तुम अगर ये list 3 जो है उसके अंदर a है 1 है b है 2 है, ना तुम चाह रहे हो कि a को रिप्लेस करना। ओके, you want to change the element, like you want to replace that a, instead of a you want to write it c. so how can you change the element? just simply list 3 का अंदर जो 0 मतलब फर्स्ट जो है like a, इसको तुम c में बदल दो, like this kind of like बेसिक। तुमको पाइथन को जस्ट तुम्हारा दिमाग में जो है जो तुम करना चाहते हो वो तुमको समझना होगा। ओके, यू हैव टू write it in very efficient way, very simple way। just list 3 के अंदर जो 0 है the index list 3, the first index of the list 3, just convert it a to c, this। okay, now unique value, so how many values are in the list, so how can you find it out? basically here देखो 1 2 3 4 5 it repeated in 2 times। now we want to unique values in a list, that what the unique values in a list, so how can you find it? like set of list 3, set is the keyword that all matlab always goes to unique value। okay, so whenever you want to find the unique values in a list, just simply write set of list 3। okay, so see 1 2 3 4 5 it's मतलब 2 बार नहीं प्रिंट हुआ, एक बार ही प्रिंट हुआ। ओके, now insert element, so if you want to insert element in the list, so how can you insert? like dot insert 0 and a, see a and 0 इधर मतलब क्या होगा ना, तुमको ये मैं पहली जो है ये तुमको इंडेक्स बता रहे हैं कि एक मतलब इसका अगर बेसिक मैं एक लाइन में बोलूँ कि जस्ट फर्स्ट यू हैव टू ट्राई to figure it out that at which place you want to insert the element। okay, so first you have to give that index and then you have to give that string or number which you want to insert। okay, so basically तुमको पहले क्या करना होगा, इंडेक्स देना होगा कि कौन सी पोजीशन पे तुम वो एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हो, एंड सेकंड में तुमको देना होगा कि तुम क्या एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, आई होप क्लियर। सो बेसिकली लिस्ट 3 में हम लोग बोल रहे हैं कि एट 0 like फर्स्ट पोजीशन, 0 इंडेक्स मतलब हेयर फर्स्ट पोजीशन, राइट। सो we want to insert a inside the list 3 which name is list 3 at the first position। so whenever we print that list 3, see a is at the first position। okay, now extend, how can we extend the list 3? there's also a method append where you just append 6 in the list। now how can we extend a list of number where append we use that one number, right? now extend is like a list, if you want to extend a list inside a list like 7 8 8 9, it's also a list and we want to extend the list। okay, so dot extend is the command, dot extend। okay, और तुमको ये मतलब नहीं है अगर तुम वेरी मतलब एकदम पहले क्लास कर रहे हो तो ये भी मैं बोल दे रही हूँ कि लिस्ट 3 मैंने लिखा है मतलब तुम लोगों को भी लिस्ट 3 लिखना होगा। दैट्स नॉट मैंडेटरी, यू कैन यूज एनी नेम विच यू वांट टू, लाइक तुम लिस्ट 1 लिखो, कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, ये होता है ना कि दीदी ने लिस्ट लिखा तो मैं भी लिस्ट लिख रही हूँ, लिस्ट 3 लिख रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नाउ रिमूव, सो रिमूव इज लाइक डॉट रिमूव, द कमांड इज डॉट रिमूव। सो हम लोग बोल रहे हैं कि लिस्ट 3 के अंदर जो ये जो 8 एलिमेंट है इसको हम लोग को हटाना है, 8 हम लोगों को नहीं चाहिए, तो कैसे रिमूव करेंगे? डॉट रिमूव, जस्ट सिंपल बेसिक। नाउ हम लोगों को देखना है कि ये जो मतलब लिस्ट है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर क्या है, मिनिमम नंबर क्या है। सिंपली मैक्स ऑफ लिस्ट 4, मिनिमम ऑफ लिस्ट 4। नाउ रिवर्स, हाउ कैन वी रिवर्स द लिस्ट? लाइक लिस्ट 4 द रिवर्स, मतलब जो पहले जो था जो एलिमेंट वो लास्ट में आएगा, जो लास्ट वाला था वो पहले आएगा, दिस रिवर्स हो जाएगा। ओके, लिस्ट 4 इज नॉट डिफाइंड। ओके, पहले आपको ये प्रिंट कराना होगा।
उसके बाद आएगा, हाँ देखो. So basically list for the reverse is like here the list for is 1 2 3 4 5 6 up to 10. Now for reverse के लिए देखो 1 is at the third position and now 10 9 8 7. So it's reverse the list. Okay, and happen I have already told. Now matrix. Okay, so basically क्या होता है, हम लोग matrix भी इधर define कर सकते हो. matrix तो सबको पता ही है, तो how can you define a matrix in the Python? So basically just write it out 1 2 3. ओके, पहले मैट्रिक्स प्रिंट करा कर दिखाते हैं, उसके बाद मैं इंडेक्सिंग के बारे में जा रही हूँ. सो पहले मैट्रिक्स प्रिंट कराते हैं. सो बेसिकली इफ़ यू राइट इट लाइक 1 2 3 4 5 6 दिस काइंड ऑफ थिंग मैट्रिसेस. ओके, मैट्रिक्स प्रिंट कराने के लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा मैट्रिक्स, प्रिंट द मैट्रिक्स. ओके, नाउ रन. सी this is there taking that matrix is 1 2 3. First is 1 2 3, then 4 5 6, then 7 8 9. Okay, now so ये हम लोग क्या करना है, देखो 1 like मैंने कुछ देर पहले ही बोला, अगर ध्यान से सुने होगे तो ये तुम लोगों को आंसर करना चाहिए. अगर तुम लोग कर पा रहे हो तो मुझे मतलब कमेंट में बताओ कि मैं दी ये मैं कर मतलब खुद से बोले हैं, ठीक है. तो और नहीं अगर हो रही है तो मैं बोल दे रही हूँ. सो देखो फर्स्ट इज लाइक कि कौन सा लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं. सो फर्स्ट इज लाइक सेकेंड लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं. सेकेंड लिस्ट इज दिस. नाउ उसके बाद बोल रहे हैं कि ओके सेकेंड लिस्ट में कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं. इट्स कह रहे हैं कि 2, दैट मीन्स द थर्ड एलिमेंट. सो द थर्ड एलिमेंट ऑफ द सेकेंड लिस्ट. ओके, so see third element second list is this and third element is 6, so that's why it printed 6. So that's all for today. So basically what this notebook covers, so basically this notebook covers the data types and operation. So just एक बार हम लोग मतलब एक देख लेते हैं कि क्या क्या करा. So integer and float. So basically we have discussed first integer and float. What are the integers and what are the floats. You can also a screenshot of it that to make it a short note of this class. Now integer and a float variable, then we go for some arithmetic operation, addition, subtraction, multiplication, division, this kind of thing. And then complex number, how can you define a complex number, then the real part and imaginary part, this kind of thing. Then string, a string is declared, how can you declare a string. There's also indexing, this is indexing, and this is slicing. There is concatenation. Then how can you finding a substring like find. Then how can you replacing a substring, converting it to lowercase and uppercase like capital letter lower letter. So it's in the Python or in programming language we use lowercase for small letters and uppercase for capital letters. Then splitting the string, how can you split the string. Now striping matlab stripping white spaces or escape character. Then handling escape character in strings also. Then there's a list. So a list is declared and modifying using append. Then nested list, nested मतलब क्या होता है, list के अंदर list within a list. So that's a demonstrator also. Then list with mixed data type are shown, like एक लिस्ट के अंदर हम integer मतलब there's we can use strings and numbers both in a string. Then there is some kind of operation include like indexing, modifying elements, and extracting unique values using set. Then inserting elements, then extending list. Then how can you remove elements. Then how can you finding maximum and minimum value of the list. Then reversing a list. Then appending elements also. And then matrix representation using nested lists. Okay, so that's all for today. I hope तुम लोगों को जो पहले आज पाइथन क्लास कर रहे हो तो उसको समझ में आ गया कि पाइथन क्लास में बेसिक जो डेटा टाइप आज जो क्लास स्टार्ट हुआ कि डेटा टाइप क्या क्या होते हैं. इसके बाद और ज़्यादा है, मैंने आज थोड़ा सा ही किया, 5 डेटा टाइप्स के बारे में बात की है. इसके बाद हम लोग वो देयर ऑलमोस्ट टपल, देन सेट, देन डिक्शनरी, दिस आर कवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास. So that's all for today.